Hello everyone. In this video, we will be discussing about the type conversion and type coercion. तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा? फंडामेंटल डेटा टाइप्स देखे हमने, जो हमारे 5 डेटा टाइप हमने देखे हैं, जिनको हम यूज कर रहे थे हमारे वेरिएबल्स के साथ। फिर हमने क्या समझा कि ये एक ऑब्जेक्ट ही है, बिकॉज द स्टेटमेंट वाज वेरी क्लियर दैट इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। देन वी केम टू नो कि किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि पीवीएम मशीन जो है अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज कर पा रहा है। हम देखते हैं कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, है ना। सो लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट फंडामेंटल डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर, इंट। तो हमने इंटीजर को इंट ही लिखा है अभी तक। उसका लिखने का रीजन है कि जब आप कन्वर्ट करेंगे किसी भी वैल्यू को इंटीजर में, फॉर एग्जांपल यदि मैं x इज इक्वल टू 5.77 असाइन करता हूं, एंड व्हेन आई प्रिंट of x, when I run this code, so you can see the 5 value is there. What does it mean? Int means int एक फंक्शन की तरह भी काम कर रहा है हमारे पास, जो हमारे x को टाइप कन्वर्ट कर रहा है हमारे इंटीजर टाइप की डेटा में, है ना। सो व्हेन यू पास द फ्लोट वैल्यू टू दिस, इट इज कन्वर्टिंग इन द corresponding integer form. At the same time, suppose I take x is equal to Boolean value, like I have taken the x is equal to true. Then I print int of x. I run this code, so you can see 1. What does it mean? Python virtual machine internally जो true को है वो 1 की तरह ट्रीट कर रही है। तो जब भी आपने उस true को int में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो आपके पास आउटपुट जो आ रहा है, that is your x is equal to, sorry, output is a int x के फॉर्म में 1 आ रहा है आपके पास। अब हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि हमने एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करा, हमने एक बूलियन वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करा, दैट वी ट्राई टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग लिटरल, है ना। तो देखिए, मैं x इज इक्वल टू आपके पास 10.5 लिखता हूं, and then I try to have the same code here. When I run this code, so you can see this, the invalid literal for the int with base 10. What does it mean? जब भी हम किसी कन्वर्जन को करते हैं, टाइप कन्वर्जन को करने की कोशिश करते हैं, और उस कन्वर्जन के टाइम पर यदि हम वो वैलिड लिटरल प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं, जिस टाइप से टाइप कास्टिंग हो रही है आपकी, या टाइप कोएर्सन हो रहा है, दोनों सेम वर्ड है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो वो आपको वैल्यू एरर प्रोवाइड करता है। मतलब जो लिटरल हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में, लिटरल का मतलब क्या है? व्हाटएवर द डेटा दैट टू बी पास टू द वेरिएबल, दैट इज नॉट द इंटेंडेड डेटा राइट नाउ, दैट इज व्हाट द रीजन वी आर हैविंग द वैल्यू एरर, है ना। सो व्हाट डज इट मीन? मतलब ये बेस 10 पर 10.5 के कारण प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इसने अंदर देखा, उसके बावजूद भी इसको फ्लोट वैल्यू मिली। इंस्टीड ऑफ दैट, इफ आई कैन सी द x इज इक्वल टू 10, बट ये इंटीजर के फॉर्म में एक वैलिड लिटरल है, जिसको मुझे स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना है। व्हेन आई रन दिस कोड, सो यू कैन सी दिस, वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एरर। ओके, सो व्हाट आई सी, यदि मैं स्ट्रिंग के अंदर भी एक वैलिड इंटीजर लिटरल को पास कर रहा हूं, सो इट विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू द इंटीजर फॉर्मेट, है ना। यदि आप और भी क्लियर करना चाहते हैं, इट इज प्रॉपर्ली कन्वर्टेड इनटू इंट और नॉट, सो यू विल टेक हियर इंट x. नाउ हियर वी विल बी यूजिंग द टाइप ऑफ y. When I run this code, so you can see the class is int. So this valid literal inside the string has been properly converted into the integer. And then we see, if I'm having suppose that is not the valid, and we are having something else value, like I take x is equal to complex, like 3 plus 5g, and when I print, let I copy and paste the code. When I run this code, you can see you are having the error, can't convert complex to int. So you can see here, I have converted the int, I have float and boolean, and as well as the string that is containing the valid literal, but it is not able to convert the complex. So if I talk about the generalized statement for this, means
can typecast any data into int except complex. When I'm using the word any data, I'm talking about the fundamental data types only right now. We can typecast any fundamental data into a int except the complex. तो आपने देखा कि हमने स्ट्रिंग से भी कन्वर्जन लिया, हमने फ्लोट से भी कन्वर्जन लिया है ना? हमने बूलियन से भी कन्वर्जन लिया है जो हमें इंटीजर के फॉर्म में आया है ना? अभी हमने इंट के टाइपकास्ट के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल चेक फॉर द टाइपकास्टिंग ऑफ फ्लोट. ठीक है. हम देखते हैं फ्लोट के बारे में, है ना? तो जब हम फ्लोट के बारे में बात करते हैं तो वी विल हैव सेम टाइप ऑफ कन्वर्जन हियर. हम एक वेरिएबल x लेते हैं, x इज इक्वल टू 10, दैट इज इंटीजर वेरिएबल. व्हेन आई प्रिंट float of x, you will be identifying the same value here, that is a 10.0. अब यदि मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू लेता हूँ, when I run this code, so you can see the 1.0, है ना? So this value has been properly converted into the 1.0 because by default it was the integer value inside the Python virtual machine 1 that has been converted into the float, that is a 1.0. And now I take a string literal here, so x is equal to, now I am taking the 10. When I take the same code here, when I run this code, can you see this? So it is taking the 10.0. It is taking the 10.0 very properly. है ना? So what we can see here, if you are passing a literal और आप उसकी अपर कन्वर्जन की साइड जा रहे हैं, आप डाउन कन्वर्जन के प्लेस पर, तो उसने लिटरल में 10 को सपोर्ट किया हुआ है आपको, है ना? इंस्टीड ऑफ दिस, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस 10, व्हेन यू रन दिस कोड, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू एरर, क्योंकि ये वैल्यू लिटरल नहीं है. सिमिलरली यदि मैं बात करता हूँ 11 के बारे में, व्हेन आई रन दिस कोड, यू विल बी फाइंडिंग द 11.0. So if you are having the integer or any kind of valid float data and run this code, so you will be getting the float conversion. What I can see here, integer value has been converted into the float, boolean value has been converted into the float, and the string value has been converted into the float. So if I talk about the generalized statement here, we can typecast any fundamental data type into float, except, let me try for the complex data also here. So in the complex data, instead of this, I'm just doing the float. When I run this code, you can see cannot convert the complex to a float. What does it mean? You can convert any data type, fundamental data type into the float, except complex. So this is a generalized statement about it. Now we see for the complex data type. So let me convert the complex data type. अब मैं directly आपके सामने लेता हूँ. Let I try to print. मैं लिखता हूँ complex and I pass the 10 here. When you run this code, you will be getting a 10.0j. मतलब इसको आपने एक integer value pass करी है तो ये उसको convert करने में capable है. Similarly, if I write complex and you pass the value 10.5, when you run this code, you are having the 10.5 and 0j. At the same time, let I pass a true value.
एंड आई रन दिस कोड, यू कैन सी द 1 प्लस 0j, मतलब उसने ट्रू वैल्यू को इंटीजर पार्ट में आपके ले लिया था, है ना. बट लेट आई टेक कॉम्प्लेक्स in bracket 10. When you run this code, you will be getting a, just a minute, it's not error due to that, it's a it was a problem due to the wrong syntax. So the complex 10 has been converted into the 10 plus 0. So it is working well over the integer as well as float, as well as a boolean, as well as over the string. But the thing should be the valid. The thing should be the valid. Suppose, what does it mean? Valid means if I am writing the 10, although this is a 10, but this is not the valid literal for your complex data type. That is what the reason you are getting the value error here. So you can see, you can convert anything. Anything means all the fundamental data type into the complex. Here one more thing, if you're passing like complex and you're passing two arguments, that is 2 comma 3, when you run this code, so you will be having the value 2 plus 3j. Similarly, if you're writing a code 2 plus 3 and run this code, so you will be getting an error. Second argument cannot be a string. But for this, when I run this code, okay, so you can second argument if the first is a string. Getting my point? So you have to pass the valid data, but in case of the single arguments, you can pass a string, it is not generating any kind of error. But here it's generating the इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. तो आप क्या देख सकते हैं कि इसने क्लियर एरर दी है आपको, टाइप एरर, कि यदि आपने कोई स्ट्रिंग डेटा पास कर दिया है तो आप सेकंड आर्गुमेंट इसको पास कर ही नहीं सकते, है ना. सो व्हेन यू रन दिस कोड, सो यू आर हैविंग द 2 plus 0j. So it's all about the conversion of the complex. Now we discuss about the boolean conversion. So in the form of boolean conversion, let I pass the integer value here, suppose bool 0. When I run this code, so you will be getting the false value. Bool 1, you will be getting a true value here. Then bool 10, you will be getting a true value here. Then bool 0 is there, you will be getting a false value there. Now we take the float value here, 10.5. When you run this code, so you will be getting a true value. When I pass bool complex data, that is 10 minus 2j, and run this code, so you will be getting a true value. When I pass bool string, suppose I am passing the Rahul, so you will be getting a true value. But one important thing is here, still I am passing this bool true. When I run this code, so you are getting the true value. And I pass bool in a string, suppose 0. When I run this code, you are getting the true value. So what is the important thing here? You are passing any fundamental data type to your boolean conversion. You can see you are having not any kind of error. Even you are passing this 0, it is very much important to take care. This string value 0 is not the reason to have the false here. So here is what is the logic with the bool. If you are providing the data to bool function, will give true value. Only these are the cases where you have false. See here, one is when I write
bool 0. You are having the output that is false. Then I write bool in terms of the float 0, 0.0, then you are having the value false. Then I write bool complex terms 0 plus 0j, then you are having the value false. Similarly, for the string, when you will pass bool, this is nothing, it's an empty string. So when we are giving a complete scenario of the 0, 0, 0.0, 0 plus 0j and empty string, these are the only cases where you will be getting the Boolean function conversion as a false. Otherwise, in every case, you will have a value as a true value. So that is what the reason. Here I pass the Rahul or here I pass the true. Conversion, never mind that what is the data inside it. It will check is it an empty string or not. If it's not the empty string, it will be giving the true output only. So this is all about the bool conversion. Now we talk about the str conversion. str stands for the string, है ना. तो हमने देखा कि बुलियन में हमने एरर्स नहीं आई हमारे पास, लेकिन कुछ सिनेरियो थे जहां पर हमने देखा कि हमें कहीं ना कहीं फॉल्स वैल्यूज मिली सारे के सारे डेटा केस में. तो वो स्पेशल केसेस थे जो मैंने आपसे डिस्कस करा. लेट मी ट्राई टू कन्वर्ट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. सो सपोज दैट इज अ इंटीजर डेटा. व्हेन आई रन दिस कोड दिस इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग. टेक द फ्लोट डेटा 10.0. So you are having the output 10.0 in the form of string. Let I take the complex data, suppose 10 plus 5j. So you are having this in the string form. Now you are having the Boolean data, that is nothing, it's a true. So when you run this code, you will be getting a true. So you can see this. When you convert all the fundamental data type in the form of the string without any kind of error, you will be directly getting a string value corresponding to the data type. So in this video, what we have discussed the type coercion, or that is also known as the type conversion. Here are some important points to note down. Any fundamental data type can be converted into the int except the complex. Similar concept is here for the float. In case of the complex, you know very well that this is what the point which has to be taken here. If you have passed the string literal as a first argument, you cannot pass another argument in that. When you do the bool conversion, in the bool conversion, all the values will be giving you the true, apart from these 5 cases where you are assigning the 0, 0, 0.0, 0 plus 0j, and finally an empty string. And during the string conversion, you will be finding all the time values that will be converted into the string form only. So for this type conversion video, that's all from my side. Thank you.